this is Chef Rakesh Yadav. Today we will make mango salad. So let's see the ingredients. हमने pumpkin लिया है roasted, cherry tomatoes, carrot grated, red cabbage, baby spinach, so healthy, olive oil, pecan nuts, feta cheese, black pepper crush and salt, and this is lettuce and lemon. So now I will show you what we need to do. चलिए अब हम इसे रोस्ट करने के लिए हमने गार्लिक चॉप ले लिया और हमने पम्पकिन ले ली, ऑलिव ऑयल, मिक्स कर देंगे। अब हम इसे रोस्ट करने के लिए डालेंगे। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसे यूज करेंगे। ये मैरिनेट हो गया, अभी हम इसे रोस्ट करके निकालेंगे। अब इसे हम रोस्टिंग के लिए डाल देंगे। सिंपल सा फंडा है, या तो हम इसे रोस्ट कर लें या हम इसे ग्रिल कर सकते हैं पैन में। तो आपके पास ओवन है तो आप रोस्ट कर लें और हम इसे 5 मिनट के लिए रोस्टिंग करेंगे 180 डिग्री टेम्परेचर। अभी हमने रोस्टिंग के लिए डाल दिया ओवन में। इसको 5 से 8 मिनट कुक करेंगे जब तक इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा, और उसके बाद निकाल के हम फिर सैलड बनाएंगे। चलिए फर्स्ट वी विल टेक द कैबेज, जब तक हम थोड़ा सा साइड रख देते हैं। लेमन को ऊपर से पोर करना है इसको। थोड़ा सा pumpkin, we'll take this all ingredients after. थोड़ा चेरी टमाटो ले लेना है और हमारा सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट चीज कैरेट। आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट कलर हैं इसमें। हाँ, मज़ा आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम हल्का सा फेटा चीज डाल देते हैं। हाँ, देखिए आप देखने में कितना यमी है ये। देखिए देखने में एकदम रैम्बो 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज पिकन एट 7। लिटिल बिट ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाएंगे हम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट बनाएं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और वी नीड टू मिक्स इट नाइसली। हम थोड़ा सा लेमन जूस, अब हम इसे देखिए मिक्स कर देते हैं सारा सैलड को। देखिए कितना यमी दिखता है ये कलरफुल रैम्बो सैलड। अब हम इसे एक बाउल में अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे गार्निश के साथ। दिस इज द मेन थिंग। ये आप कोई आपको गेस्ट आए तो उसको आप ऐसे बना के, आपको बुफे में लगाना है तो ऐसा बना सकते हैं, और आपको पर्सनल ही खाना है तो एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके अब हम इसमें अच्छी तरह गार्निश करेंगे। लगना चाहिए कुछ रैम्बो कलर आ रहा है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए एकदम एक पॉइंट डालेंगे, अभी एक चीज़ें इसमें ऊपर से गार्निश करेंगे जो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये देखिए पम्पकिन एकदम कलरफुल लगना चाहिए सैलेड। See, you can see the beauty. Now put some spinach, not much, only little spinach. You will get the spinach. Wow, it's amazing. Some cherry tomatoes. Oh wow. And now the final thing is our red cabbage. And this is the time for rock. This is feta cheese, and this will change the texture, change the color and everything. This is the final and
last thing now is now we will put some pecan nuts. It's like, oh, amazing product now look like. Oh wow. Now we are ready. Just we will call the special guest today. Today our special guest is Aman Bedi. Let's call Mr. Aman. Hi Mr. Aman, how are you? I'm good. So today we make Wow, it's something very nice. very unique bamboo salad. It's different in color. Taste wise is very different. So just try and give us your feedback. Wow, it looks very nice and very rainbow in color. So the name says. So just taste and let us know. Very mild, not much flavors or feel refreshing or something. Yeah, it's very nice. And the important thing that I think it's no oil also, no? No oil. No oil. It's very healthy. minimum, like quarter spoon of olive oil. Especially if you feel the roasted pumpkin, that's very important. Yeah. The flavor comes the roasted pumpkin and you have feta cheese also, no? Yes. Feta cheese, cherry tomatoes, and pine seeds. Pecan nuts we have in this. So, आप इसे try करें and let us know also how the Please taste. try it home and it's very nice, very delicious and very healthy. And thanks Chef Rakesh who made my day. Cheers.